जी अजय जी, ऑल योर सर। ओके, नमस्कार दोस्तों। और आज स्पेशली विमेन्स इंटरनेशनल डे है, तो सब हमारी माताओं और बहनों को हैप्पी विमेन्स डे। Also, I would like to thank because it was a woman who brought me to Alcoholics Anonymous. That's my wife. So I am forever grateful. And also my mother's prayer. मेरी माँ का जो आशीर्वाद और प्रेयर थी इंडिया में, उनको मालूम था मैं क्या कर रहा था, बहुत प्रे किया। तो ये दोनों लेडीज जो मेरी जिंदगी में हैं, मेरी माँ और मेरी पत्नी, इनकी वजह से मैं आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हूँ, जिंदा हूँ। ये सब उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद। मैं 51 साल से मैं कनाडा में रहता हूँ, तो मुझे माफ करना, कई बार मुझे हिंदी शब्द मेरे दिमाग में नहीं आता, तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा हिंदी में बोलूं, मगर कभी कभी राइट वर्ड दिमाग में नहीं आता, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो मैं गुजरात से हूँ, जूनागढ़ गांव में मैं आई वाज रेज्ड एंड ब्यूटीफुल सिटी। मेरे माँ और मेरे पिताजी इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो उनकी ट्रांसफर हमेशा 2-3 साल का प्रोजेक्ट खत्म होने की हो जाती थी, लेकिन हम वही एक ही गांव में रहते थे। मेरे फादर 21 दिन प्रोजेक्ट में रहते थे, 9 दिन घर आते थे। मेरी 4 बहनें थी, मेरा नंबर 4था था, मुझसे एक छोटी बहन। मेरी माँ, if she was Catholic, she would have been saint by now. मैंने कभी उसके जो कितने संस्कार उसने मुझे दिए हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल थी, जब मैं ए में आया तब मुझे पता चला कि मैं कितना भाग्यशाली था कि मेरे माँ बाप दोनों, उन लोगों ने मुझे जो संस्कार, खास करके मेरे पिताजी who gave me discipline. मैं बहुत घबराता था मेरे फादर से। 21 दिन बाहर रहते थे ना, तब आई वॉज सो हैप्पी कि चलो अब मैं बाहर घूमूंगा, कुत्तों के साथ खेलूंगा, बटरफ्लाई कैच करूंगा, दोस्तों के साथ घूमूंगा। 9 दिन घर आते थे, तब मेरी लेफ्ट राइट लेते थे, क्या पढ़ा, क्या किया। अगर मुझे उनके सवालों का जवाब आता भी था, लेकिन मैं इतना घबरा जाता था कि मैं जवाब नहीं दे सकता था। तो of course he was an angry man. He occasionally hit me, which really bothered me. तो मैं तो हमेशा प्रार्थना करता था कि 9 दिन खत्म हो जाए, वो चले जाए, But eventually, after coming to Alcoholics Anonymous, I mended our relationship. Anyway, तो मैंने 1 साल बम्बई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। फिर मेरे फादर का जीप एक्सीडेंट हो गया, तो उनको एमनेजिया हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ा जूनागढ़, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि अगर वो गिर जाएंगे तो उनको हेमरेज हो जाएगा, तो तू यहाँ हमारा कोई मानता नहीं, वो हमारी कुछ मानते नहीं है। तो आई स्टेड 3 months. By the time it was too late for second year, I joined college in Junagadh because I wanted to be graduated before I went to Canada. And there was a requirement for me to be before 21. 21 साल के पहले मुझे जाना था, वरना इमिग्रेशन नहीं मिलेगा। So I joined university in Gujarat and I graduated. मेरा बचपन गया। मैं 16 साल के आस के
दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी गया और 20 साल में मैं ग्रेजुएट हो गया। मेरी कोई ऐसी मैं जीनियस तो नहीं था, लेकिन जो मेरी मेमोरी थी बचपन से, इट वाज fascinating for other people. If this guy applies himself, he will be something. लेकिन the ism was पहले भी था, डिसिप्लिन था नहीं और दिमाग चंचल था, तो पास तो हो जाता था, फर्स्ट क्लास पास हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं कोई आदर्श विद्यार्थी या तो मैं कोई जीनियस की कैटेगरी में आ सकूं। तो मैं यूनिवर्सिटी खत्म करके मैं कनाडा आया। मेरी बहन थी, उसने मुझे नॉमिनेट किया था। मैं उसके हस्बैंड, उसकी 3 बच्चियां और उसकी माँ, मेरे ब्रदर इन लॉ की मदर। द रिक्वायरमेंट वाज कि मैं यूनिवर्सिटी वहां ज्वाइन करूं। यहाँ पर कॉलेज होती थी, तो मैंने 3 साल का कोर्स लिया कनाडा की कॉलेज में, टोरंटो की कॉलेज में, और हम रहते थे ब्राम्पटन। पार्ट टाइम नौकरी करने का अभी था, क्योंकि मुझे आई हैड टू पे माय लिविंग एक्सपेंसेस टू माय सिस्टर एंड ऑल्सो all the expenses, the personal expenses of myself. तो मैं करीब 7 महीने गुजर गए पार्ट टाइम नौकरी में। एक दिन किसी ने मुझे कहा कि हम लोग बार में जा रहे हैं, आज फ्राइडे है, हम 4 घंटे ही काम करेंगे, तुम हमारे साथ आओगे? मैंने कहा वहां क्या होता है? वो कहते हैं कि लंच करेंगे, बियर पियेंगे। उस दिन तक मैंने कभी बियर जिंदगी में पी नहीं थी। मैं इन लोगों के साथ गया, मेरे कॉलेज के साथ, और पहले बियर में कुछ असर नहीं हुआ। मैंने दूसरी बियर पीना, देयर वाज समथिंग हैपनिंग टू मी। दिमाग में आई स्टार्टेड टू फील गुड, आई वाज रिलैक्स्ड, और मुझे कोई फियर नहीं थी कि मैं स्ट्रेंज आदमी हूँ, नया नया कनाडा में आया हूँ, मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं, इनकी तरह मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, बट आई फेल्ट एट ईज। ये सब मेरे दोस्त लगते थे मुझे, और आई हैड सो मच फन। 2 बियर। मैं बस में घर जा रहा था, तब मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार ये पूरी जिंदगी मैं 21 साल का हो गया, I never felt this good. I'm happy. Things are looking good. और नए दोस्त मिले हैं. Life is good. लेकिन मैं बियर घर में कैसे ले जाऊं? मेरी बहन को पता चलेगा। तो मैंने वहां पर 12 आउंस की निकी, उसको निकी कहते हैं, तो I used to smuggle. वो जो निकी होती है, वो मेरे विंटर बूट में, उस वक्त विंटर था, तो विंटर बूट में मैं छुपा देता था और फिर वीकेंड में पीता था। 3-4 वीक हो गए, फिर मेरे ब्रदर इन लोग को पता चला। ऑफ कोर्स यू कैंट हाइड दिस। तो उसने मुझे कहा, अजय मेरी 3 छोटी बच्चियां हैं, मेरी माँ है, और मैं भी पार्टी के बगैर कभी शराब पीता नहीं, इस घर में शराब पीना अच्छा नहीं है। मेरी जिंदगी में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, आई बिकेम ए रेबल। मैंने कहा, आज तक मैंने अपने पिता का सुना है, आज तक मेरे ब्रदर इन लॉ का सुना है, मैं अगर थोड़ा सा शराब पीऊं तो उसमें क्या उनको जाता है, मैं कोई नुकसान तो नहीं कर रहा। मैंने कहा, ठीक है, आई विल मूव टू माय फ्रेंड्स रूमिंग हाउस इन टोरंटो, वेयर आई वेंट टू कॉलेज विद हिम। उसने मुझे कहा था कि अजय, इफ यू एवर वांट टू कम, यू कैन स्टे विथ अस, एंड सो आई लेफ्ट। मेरी बहन वो काफी स्केर्ड,
वो कहते अजय तूने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया पढ़ाई के सिवा, तेरे कपड़े किसी ने उठाए, तेरा बर्तन किसी ने मांजे, तेरा खाना किसी ने बनाया, तेरी पैंट किसी ने इस्त्री की, आयरनिंग की, तूने कुछ नहीं किया, तू कैसे सरवाइव करेगा? यू आर हेडिंग टुवर्ड फेलियर। लेकिन मैं पहली बार जिंदगी में मैंने कहा कि नहीं, आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू, आई एम एन एडल्ट नाउ। To cut it short, alcohol became a full-time job. Eventually, within 6 months, the full-time school became a part-time school because I had to support myself, my drinks, and my charges for the room and food. You know, it was 6 months, alcoholism took over me. I had to drink. It was not to the point where I had to drink in the morning. But as soon as I'm finished with everything, this is all I did. And you know, sometimes alcoholics have bright idea. 3 साल हो चुके, मैंने कहा कि मैं कुछ कर नहीं रहा। 3 साल का कोर्स 3 साल में मैंने 1.5 साल ही किया, क्योंकि मैं सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट लेता था और या 3 साल में मैंने 1.5 साल का पूरा किया। मैंने कहा लाइफ इज मीनिंगलेस राइट नाउ, ऑल आई डू इज ड्रिंक। मुझे पता नहीं था कि यू नो आई हैव ए सीवियर प्रॉब्लम विद अल्कोहल। हमारे स्ट्रीट में लड़की रहती थी जिसके साथ मैं हाई स्कूल गया। हमारा लड़के लड़की दोनों का हाई स्कूल एक ही था, तो मैं उसको पहचानता था। वो तीन पुश्तों से वहां रहते थे, हम भी रहते थे। तो I asked her when I left, I said, yeah, can I write letter to you? She said yes. And I sent a letter to her. I said, I'm coming to India. I want to get married. Would you marry me? And she said yes. I went to India, not knowing that I have a problem with alcohol. Big book में लिखा है कि every abnormal alcoholic entertains the idea that one day he or she will drink normally. मैंने सोचा था कि मैं शादी करूंगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, और पता ही नहीं था कि आई कैनॉट लिव विदाउट अल्कोहल। जब मैं उसको एयरपोर्ट पर पिकअप करने गया, आई कुड हार्डली स्टैंड। मेरी वाइफ, शी हैजंट सेट फुट आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट। शी केम आउट ऑफ the arrival. She looks at me, and that was 47 years ago. There was a terror in her eyes. आज तक मैं भूला नहीं हूं वो terror in her eye. She never in her wildest dream or a nightmare thought that I would be in this, ये हालत में होगा. Somehow we came home. I drove. I don't know how. I didn't get caught. I sincerely tried to stop. कितनी कसमें खाई। सुबह में मैं लिकर स्टोर 10 बजे वो खुलता था, वहां पहुंच जाता था। I was powerless over alcohol. Alcohol has taken over me. बिग बुक में वो भी लिखा है कि men and women who drink, eventually the alcohol gives so much delusion
that he or she will not know right from wrong, true from false. कभी कभी मैं I look sick, तो वो लोग मुझे रिफ्यूज करते थे अल्कोहल देने के लिए, तो मैं बाहर लोगों के पास भीख मांगता था, $1 दूंगा, मुझे $4.20 की मिकी आती थी, मैं उनको $1 देता था, वो मुझे ला के देते थे, और पावरलेस। मैं ज्यादा मेरा ड्रंक अलॉक नहीं कहूंगा, मेरी वाइफ became pregnant 21 days before my son was born, New Year, 31st December 1979. I was at my friend's house. He begged me. He said, Ajay, you're too drunk to drive. I said, no, my wife is pregnant. All her pills and medications and everything is there. I go. And I got caught for impaired driving. I was taken to the police station, fingerprinted, charged, whatever. मैं घर आया रात को 2 बजे टैक्सी में. My car was towed. मैंने मेरी वाइफ को कुछ नहीं पूछा. पहले तो हमारे अपार्टमेंट में 2 वॉशरूम थे. एक वॉशरूम का टॉयलेट टैंक में मैं अपनी ड्रिंक अपना बॉटल छुपाता था. सबसे पहले मैं घर आया, वॉशरूम गया, मैंने पिया. मैंने वाइफ को ये भी नहीं पूछा तुम घर कैसे आए. Alcoholic who is active alcoholic, the selfish, self-centered, I don't care for anybody, the alcohol. और दूसरा मेरा पावरलेसनेस मैं आपको बताऊं, I used to get alcohol poisoning, lack of food, drink a lot, so I used to end up in a hospital. They pump my stomach and then off I go. 5वीं बार मैं अपना नाम भी भूल गया. उन लोगों ने मुझे 7th फ्लोर पे रखा ऑब्जर्वेशन के लिए. साइकियाट्रिस्ट, नर्सरी, वो सब. वहां पर मुझे एक वेरी फेमस पेंटर, वो भी अल्कोहलिक था, वो भी मिला. वो कहते अजय आज मैं घर जा रहा हूं, तू जब रिहाई हो तब तुम मेरे घर आ जाना, हम पार्टी करेंगे. नाउ जस्ट थिंक, 2 idiots almost died of alcohol. They are in a nut house getting a psychiatric help and they are planning another drink. I was powerless over alcohol, that my life became unmanageable. Not only my life, my family, my छोटा बच्चा, 9 महीने का था, मेरी wife, who was so devoted, she loved me, सबको छोड़ के वो मेरे पास आई थी. She left one night with my son. She worked in a bank and she was a strong woman. She is a strong woman, even today. She did not want to put her son in that situation when life was unmanageable. I did what I always done. I drank every day. 6 महीने का मेरा बच्चा था तब हमने फैमिली पिक्चर लिया था, तो वो लिविंग रूम में लटकता था. तो मेरा छोटा बच्चा 6 महीने का, मेरा सन, somehow I'm drinking and I felt that he's talking to me. उसने मुझे कहा कि डैडी, तुमने सारी जिंदगी सबको ब्लेम किया, तुम्हारे फादर को, तुम्हारी सिस्टर को, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को, पूरा कनाडा को, मेरी माँ को. मेरा क्या कसूर है, आज मेरे पास बाप नहीं है.
16th of June 1982. Next morning, I went to detox. I stayed there 7 days. There was a meeting put up by group called Sunnyside Group in Toronto. And I said, I will join that Sunnyside Group after I come out of detox. And I did. Mind you, I'm sick. Alcohol takes away the rationality. Alcohol takes away clear thinking. I'm going to the meetings and I'm taking everybody's inventory who participates. The person who does the slogan, I say, oh, he's not ready to speak yet. He's still a amateur. ये you know. और मैं ना तो मेरे पास family था. I owed thousands of dollars. I was unemployable. लेकिन मैं सबसे ज्यादा smart था meeting में. I'm sober 7 months. Well, not sober, dry 7 months. एक आदमी ने स्लोगन किया, keep an open mind. वो कहता था कि मुझे ओपन माइंड नहीं था तो मुझे 13 साल लगा, 13 महीने में सोबर हूं आज. लेकिन वो 13 महीने के लिए मैं 13 साल मुझे लगा. मीटिंग के बाद में उसके पास गया. मैंने कहा ओपन माइंड क्या है? वो कहते हैं अजय, ये सबको देखा है जो अगली रो में है, दूसरी रो में है. दे आर लिविंग ए हैप्पी, सोबर, मीनिंगफुल लाइफ. आर यू? Oh my God, there was a flashback. मैंने कहा यार 24 घंटे में 23 घंटे तो मैं फियर में रहता हूं. रिजेंटमेंट होता है, एंगर होता है. somehow 1 घंटा में लेट जाता हूं. वो कहता है तुम कितने साल, कितने महीने ये करोगे? You will be finished. Open mind means listen to what they are saying. Open mind is do what they are doing because it's working for them. Because it's not working for you. You're not drinking, but you're dry. And I don't know how long you can go on. It was not a spiritual awakening that night, but it was a spiritual spark. Something happened. And I started paying attention. After the meeting, I stacked the chairs. Sometimes I mopped. मैंने इंडिया में कभी मॉप नहीं, झाड़ू नहीं लगाया था, वहां लगाता था. I used to go to meeting early. तो उन लोगों ने देखा कि ये तो आदमी is doing fine. उन लोगों ने मुझे चर्च की key दी. वो कहते you open the church. I felt so good. Eventually, 1 year, my wife was invited. She came with my son at my 1 year medallion. उसने मेरे स्पॉन्सर के साथ बात की. फिर करीब 15-20 दिन हो गया. उसका फोन आया. वो कहते अजय, I need a husband. My son needs a father. I'm going to give you another chance. It has been almost 44 years in June that we are together. That son is still with me, with his twins, his wife. We had to buy a big house because they wanted to stay with us. आजकल इंडिया में नहीं रहते बच्चे, लेकिन हमारे कनाडा में मेरा जो बड़ा बच्चा है वो, उसकी वाइफ, उनकी 2 ट्विंस हमारे साथ हैं. मेरा छोटा बच्चा, उसकी शादी हो गई राजस्थान में. वो हर वीकेंड पे आ जाता है घर में. लाइफ. लेकिन मैं एक ही बात बताऊं. After that spiritual spark, I learned open mind. धीरे धीरे फॉग, धुम्मस जो था वो जाने लगा. नए नए विचार आने लगे. I
worked closely with my sponsor, did the 12 steps. 12 step सर्विस किया मैंने, मिमिको जेल, ओजिंगटन डिटॉक्स, 1001 क्वीन स्ट्रीट, सब जगह पर हम मीटिंग करते थे और मैं आई पार्टिसिपेटेड. माय वाइफ कोऑपरेटेड विथ मी. वो कहती है ठीक है तुम जाओ जहां जाना है और आई विल लुक आफ्टर द किड एंड डोंट वरी यू नो. सो लाइफ धीरे धीरे ठीक होने लगी. मैंने सब so many corporations I owed money to. I paid everything. I made amends to everyone. But those are financial amends. The real amend that I owed to my sister, to my wife, to my parents, even though my parents did not witness, but they heard, they knew. My mother used to dream about it. उनको स्वप्न में आता था कि मेरा बच्चा कितना दुखी है. तो मैंने I used to write letters to my father and mother. I used to send money, even though they didn't need it. उनका बड़ा अच्छा पेंशन था. But वो कहते अजय, don't feel guilty for anything. You just look after yourself, your wife and your kids. 1990 में मैं 8 साल सोबर था. मैं इंडिया गया. मेरी वाइफ जाती थी, मैं नहीं जाता था. लेकिन my father and mother, I took them to the hill station for Mount Abu. We stayed there for 7 days and I talked to my father and my mother. मेरी mother वो कहती बेटा मैं तो माँ का प्यार होता है वो निस्वार्थ होता है, उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती. मेरे फादर ने कहा कि अजय, you don't have to make amends. I see your wife, I see your both sons, and they look well. So I'm sure you're doing something right. लेकिन वो कहते थे अजय मैं एक बात बताऊं, मैं बहुत गरीबी में मैं इंजीनियर बना. मेरी भी इनसिक्योरिटी थी, इसलिए मैं तेरे पर ज्यादा डिसिप्लिन रखता था. मैंने कभी तुझे भी दुखी किया है. वो कहता है एक बात मेरी मान, जो इनसिक्योरिटी मैंने तुझ पे डाली थी वो तुम्हारे बच्चे पर कभी नहीं डालना. माय गॉड, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. आई स्टिल प्रैक्टिस दैट. मेरी इनसिक्योरिटी मेरे बच्चों को मुझे नहीं देनी है. तो इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप. 1 महीना में रहा और I became very close to my father, and my mother was just went gaga goo over my both boys. My younger son was 2.5. He was a sober kid. I was 5 years sober when he was born. तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं. मैंने आपको कहा ना कि जो powerlessness है, it's step 1. I cannot fight it. We are a greatest riddle. The पहली कहते हैं ना हिंदी में, वो हम पहली है. ना तो साइकियाट्रिस्ट, ना तो साइकोलॉजिस्ट, ना तो अपने पेरेंट्स, ना तो अपनी वाइफ, ना अपने दोस्त समझ सकते हैं हमें, क्योंकि we are powerless over alcohol. And because of our powerlessness, our life of course becomes unmanageable. Not the physical unmanageability, internal unmanageability. Internal unmanageability because we are confused, we are scared, we are dazed, we want to quit. It says in a big book that many alcoholics who want to quit, but they can't. They give up. Every single person who are here right now, how lucky we are. It's a gift. 1 day of sobriety is such a gift
that many millions of people in the world are not getting it. Acceptance is the key. I must accept that I'm an alcoholic and I cannot do it on my own. If I could have, I would have, but I couldn't. Came to believe power greater than myself could restore me to sanity. The step 2. The belief comes after practice. All I need to do is bring my body. The mind will come. The beliefs will come. After belief comes faith. हमारे हिंदी में गुजराती में कहावत है ना, पंच वहां परमेश्वर. 5 लोग जहां होते हैं वहां परमेश्वर होता है. ये मीटिंग में तो कई लोग होते हैं, वहां भगवान हाजिर हैं. बिकॉज आई कैनॉट फाइंड इट विद इन मी. मेरे डीएनए में लिखा कि मेरे में फेथ नहीं है, मेरे में बिलीफ नहीं है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है. आज मैं जो कहूंगा, लार्ज प्रोमिसेस पुअर परफॉर्मेंस. मैं प्रॉमिस तो बहुत करूंगा, परफॉर्म नहीं कर सकता. Alcoholics Anonymous allowed me, gave me that belief that I will be restored to sanity. Not restored to sanity, I was not crazy. But sanity means the soundness of mind, the rational thinking, not irrational. Because power greater than myself. The people in the group, 12 steps, 12 traditions, big book, and a fellowship, that all these things can help me restore to my sane thinking. And how can I do sane thinking? आज मैं almost 44 years, not quite 44 yet, in June, मैं सुबह में सबसे पहले उठता हूँ. I ask for God keep me away from the first drink today. I don't ask for sobriety. I work on my sobriety. ये मीटिंग के पहले I already walked 6,000 steps, took shower. I did my prayer, I did my meditation. While I walk, I do my prayer. And I don't have a set prayer. You know, over the years, last 25 years, I have studied our scriptures. I have many books that I bring from India or courier it. It helps me because there are a lot of things that I don't know. The God, keep an open mind. God is good orderly direction. God, as I understand Him, helps me to a person who is full of fear, who takes away my fear today because I asked for it. And trust me, when I asked sincerely that take that obsession of drinking away from me, He did. Why can't He take other things away from me? All I have to do is to sincerely ask God, take this away from me. So every morning I wake up, I take shower, I do my prayer, meditation, walk, my exercise. In my meditation, I seek. Sometimes meditation doesn't work. That's okay. I start walking, and then while walking, while praying, some good thoughts come in, because it is so important that I start my day. And throughout the day, we have 6 people in the house. Used to be 7. After my younger son got married, he moved out. Of course, there are challenges in life. The friends, family, the situations. But none of these challenges
are big enough that I cannot handle, because I have power greater than myself. I seek guidance. I don't believe in one-upmanship. मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हूं, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं. और 70 साल की उम्र में कोई पूछता नहीं है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां चलाते हो. वो पूछेंगे आपकी तबीयत कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं. You know, I stay humble. It is so important that I trust my higher power. And you know, in 44 years, I've continued with Alcoholics Anonymous. I'm a good member of my group. In my Markham Unionville area, there are several meetings. I regularly go there. They all know me. And of course, you know, 44 years almost. They think it's quite an achievement even in Canada. In Markham Unionville area, we have like 2 people who are sober over 40 years. But I humbly go to the meetings. I don't call the shots anymore because I don't need, my life is simple today. I do my prayer meditations. I have lunch with my friends. My wife, you know, we go out. I travel all over, you know, with my wife. And life today is simple. It's beautiful. If I wrote a book today, you read that and you will think that this guy is making things up. He's fantasizing. But आप यकीन मानिए कि मेरी जिंदगी में ऐसी चीजें बनी हैं. When I was thinking, I would have never thought they were possible. And that is because I done what I'm doing, what I'm supposed to do. Half measures await us nothing. Nothing. I cannot go halfway. If I want to stay sober, not dry, then I have to go all the way. And it says in how it works that no amount of human power would have relieved our alcoholism. B, that God could and would if he was sought. C, and God to me today, yes, it has a name. And I have faith in him that he will do whatever. You know, sometimes things happen in life that these are, to me, it's unacceptable. But that is terrible for an alcoholic like me. I must learn to accept things in life as it comes. Because if I don't, I'll be restless, irritable, and discontent. And because of that, people around me will be like that. Everything does not go my way. I am not the center of the universe. There is someone there. The death is inevitable. A human must accept that. I worked in a hospital for 32 years. And there were 7 alcoholics in my 32 years who were dying because we had one unit which was called palliative, and they were dying of cancer. The last, there was one guy, Charlie. I swear he couldn't read or write. He used to come to our meeting. He was sober 7 years. He just listened. He came to my hospital. I said, Charlie, do you want anything? He said, what can I have food here in the hospital. All I am waiting is that I pass. He accepted that. There was another guy. He was even
My God, you know what he said? There is a book called Chariots of God by Eric von Däniken in 70s. In the last page, Eric von Däniken says that I'm a microchip. When I go, I will be connected with a motherboard where I'll be aware of all the dimensions. And this another guy that he told me in my hospital, he said, Ajay, I'm going to the motherboard. He accepted the death. And I learned from all these people. You know, Dr. Leo Pascalia was a Harvard University professor. He resigned and he traveled all over the world. Sri Lanka, he lived in a farmer's place. In India, he lived in UP, where lots of rain and he would walk. He didn't live in a five-star hotel. He went to Japan. He stayed in a Nursery. At night, they gave him a piece of paper and a pencil and says, go in this room and there is a candle. And that little paper said, a little story. He said there was a llama going to beg alms. अपना कमंडल पकड़ के वो भीख मांगने जाते हैं. कमंडल खत्म पूरा हो गया, वो वापस आते हैं. लेकिन वो हिल था, तो he slipped. नीचे हंग्री बेर था, ऊपर लायन था. उसने स्ट्रॉबेरी बुश पकड़ा, लेकिन स्ट्रॉबेरी बुश तो बड़ा फ्रेजाइल होता, वो टूटने लगा. तो उसने देखा कि स्ट्रॉबेरी बुश में एक रेड राइप स्ट्रॉबेरी है. उसने पिकअप किया, खाया. वो कहते हैं हाउ डिलीशियस. तो कहानी का मतलब ये है कि लीव फॉर द मोमेंट. द पास्ट ही फेल, द फ्यूचर द हंग्री बेयर इज वेटिंग. प्रेजेंट दिस strawberry branch is breaking, but a particular moment he is eating a red ripe strawberry. The Alcoholics Anonymous is about attitude. I'm happy when everything is going my way, but I need to have that attitude when things are not going my way. How I stay happy. I have a food to eat. I have a place to stay. I have a family. I'm loved. I love. What more do I want? This program is about gratitude. The shackles, यानी कि चेन जो मेरे हाथ पैर में थी अल्कोहल की, वो छूट गई. तो अब मैं क्या बेबस हूं? I need to have life, and in order to have that life, I need my attitude adjustment. क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो लाइफ में कुछ नहीं है. हम इंसान हैं, मैं इंसान हूं. I have some purpose in life. And for the biggest purpose for alcoholics that other so-called normal people don't have, we can help others unconditionally. You know, when they are 1 year sober, there's a big celebration, the cake is cutting, everybody's singing happy birthday. That's a joy in my life today. Because for me, that helplessness has far gone for so many years. So when I see a guy coming in or a girl coming in, you know, I have so many AA daughters and AA sons today, other than my two real sons. I'm so grateful because I've seen them from day one and their life changed. Their life changed for better. And it is only possible by Alcoholics Anonymous doctrine, the 12 steps, 12 traditions. Traditions, steps
keeps us sober. Traditions makes us better people. Every tradition in early 50s when traditions were, because of tradition, AA is still alive and well today. Otherwise, we would have been gone long time ago. I can't even keep myself happy. How the hell two alcoholics will keep it going? They will fight. Because of tradition, we get along. We go on. Help others. But I cannot help someone if I haven't done the 12 steps. Spiritual awakening, ये नहीं है कि आकाश में से भगवान उतरे घंटी बजाई कि आजा. नहीं. Spiritual awakening is something that you start to feel the trees, you start to feel the leaves, you start to feel the weather, you start to feel other people's the sorrow, the joy. That's awakening. I come out of myself, my self-centeredness, my selfishness, and I feel others. And that is a spiritual awakening. And it is promised to every single person who put themselves in these 12 steps, work this program. It says that Alcoholics Anonymous is not for the people who need it. Alcoholics Anonymous is not for the people who want it. Alcoholics Anonymous is for the people who work it. It says in a big book, even though it came from Bible, I have no problem. It says, faith without works is dead. I cannot have a faith if I don't work it. मैंने शायद I have सुधीर जी, अब मेरे पास टाइम है कि टाइम खत्म हो गया? हेलो सुधीर जी. सुधीर जी, हाँ बोलिए सर. मेरा टाइम खत्म होने लगा है ना. अब कितनी टाइम है? हाँ नहीं और समय है पूरा. आप क्लियर कीजिए, बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आप क्लियर कीजिए. बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से. तो देखो, हाँ तो मैं आई एम हैप्पी. मुझे 51 साल से कनाडा में मैं रहता हूँ, मगर मैंने अपना कल्चर नहीं खोया, मैंने अपना ट्रेडिशंस नहीं खोया. मैं आज भी और मेरा पूरा फैमिली, मेरे दोस्त, हम सब त्योहार मनाते हैं. और यहाँ पर वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. इंडिया में जो चीज मिलती है वो प्लेन में यहाँ आ जाती है. हाँ, पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन वी हैव एवरीथिंग. क्योंकि जो हमारी इंडियननेस है, वी वर्क हार्ड if we apply ourselves, especially alcoholics. It is so sad when I see someone going out, but I cannot make anyone sober. I can only carry the message. I'm not a messenger. Message is already there in Alcoholics Anonymous. But घोड़े को सिर्फ पानी पीने ले जाओ, लेकिन घोड़े को पानी पीना है कि नहीं पीना है, वो इट्स अप टू हिम. It used to bother me, not anymore. क्योंकि there is such a thing as destiny. Those who are lucky, those who are पता नहीं पूर्व जन्म का कर्म आज काम आएगा. तो जो सोबर है आज का दिन, I don't have the words to describe the gift from that power greater than ourselves, because it's not available to millions of people. Embrace it. Embrace it with your heart and say, yes, I've got something which is priceless. अल्कोहलिक्स में सब आते हैं,
कोई मिलियनर होना ना होना, ये होना, अच्छी जॉब होना, you know what? Whatever we have, we are able to accept it and be happy. 2 रोटी तो खानी है, और ज्यादा कितना खाएंगे? So Alcoholics Anonymous teaches me to be grateful. जो है, I'm grateful because I have million times more than I ever did, and that million times is my happiness, my contentment, not happiness, content with whatever I have. कई मीटिंग में जाता हूँ, कोई स्ट्रेंज मीटिंग, एक मीटिंग में तो मैं आई वाज स्पीकिंग फार फ्रॉम टोरंटो, तो जो ग्रीटर था वो कहते हैं, इट्स योर फर्स्ट मीटिंग टुडे? आई से यस, फर्स्ट मीटिंग टुडे. आई डोंट हैव टू बी बिग शॉट. आई एम वन ऑफ द Alcoholics Anonymous members, and what important is that we are sober one day, today. God knows what happens tomorrow. It says in yesterday, today, and tomorrow, sun may rise or not rise, behind the cloud, whatever. But today is so important. What I do today, it affects tomorrow too, because that positive attitude will bring me to the next day and the next day. The practice. We are alcoholic, but we are also human. Things that we do becomes our second nature. Positive thinking becomes our second nature. All I have to do is to practice one day at a time, and it will be a routine. It will be my habit. It will be my ritual, whatever. You know, मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम मुझे लगता है मैं खत्म हो गया. मैं आप सबको, मेरे दोस्तों को, मेरी ऑल अनोन बहनों को, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, और आई विश यू अनदर डे ऑफ सोब्राइटी. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.